We talk about the Citizenship Amendment Act, and I'm going to bring you the stories of a number of these people who have been living in Pakistan, in Afghanistan and Bangladesh. They finally decided to take refuge in India. They tell us their horror tales of how they were persecuted, ill-treated and victimized for their identity, for the religion that they belong to. I'm going to quickly take you through some of these ground reports and the case studies that have been filed by my reporters. देश में CAA कानून लागू हो चुका है। कल केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। मकान नंबर 10/719 में मैं मौजूद हूँ। ये मानसरोवर स्थित जगह है जहाँ पर करीब सैकड़ों की संख्या में परिवार जो रहते हैं, जो पाक विस्थापित परिवार हैं, पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं। सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको नागरिकता नहीं मिली है। माता जी, कब आप पाकिस्तान छोड़ के आए, कब आए आप? 12 साल हो गए। 13 साल। 13 साल आपको? हाँ, हाल नागरिकता नहीं मिली। नागरिकता नहीं मिली, लेकिन अब नया कानून सरकार लेके आई है। अब आपको कहीं ना कहीं रास्ते खुल गए नागरिकता के। नागरिक मिल जावे तो रास्ते खुल जाए। तो आपको क्या क्या परेशानी आती है? नागरिकता नहीं है। कुछ और भी लोग हैं भाई साहब, क्या क्या परेशानी आपको आती है? आपको नागरिकता नहीं मिली, इस वजह से क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सर, नागरिकता नहीं मिलती है तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जैसे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलना, या फिर राशन कार्ड नहीं बनना, बहुत सारी सुविधाएं हैं। और जैसे बच्चों का इसका मेडिकल की जो है हॉस्पिटल वगैरह में जो है उनका इलाज नहीं हो पाता है। जैसे अभी एक बच्ची को 10 दिन पहले कोई बंदा लेके गया था डिस्पेंसरी, बिना आधार कार्ड के उसको दवाई नहीं मिली। लेकिन अब नया कानून लेके आई है सरकार, कल से लागू भी हो गया। इसके बाद रास्ते खुलेंगे? नए रास्ते तो खुल चुके सर। रास्ते आप अभी देख के आए थे, वहाँ हम पार्क में भी थे, तो वहाँ पे क्या है, जश्न हो रहा है। जैसे होली खेली जाती है, वो होली का माहौल लग रहा है वहाँ पे। तो सब चीज़ें हो जाएंगी। अब तो भारत सरकार ने जो है रास्ता एक बार खोल दिया है, पूरा खोल दिया रास्ता। कैसे गुजारा करते हैं आप? नागरिकता नहीं है आपके पास, क्या काम करते हैं? नागरिकता नहीं है तो मेहनत मजदूरी का काम है। जैसे अभी हमारे रिलेटिव ही हैं, ये अपना हटवाड़े का काम करते हैं। यहाँ पे जगह जगह मंडी के, जैसे मंडियाँ आपने देखी होंगी भाई, आज मंगल मंडी है, बुध मंडी है, ठीक है, ऐसे शनिवार की मंडी है। अलग अलग जगह पे मंडियाँ लगाते हैं और उससे गुजर बसर करते हैं। तो कहीं ना कहीं नागरिकता ना होने के बड़े नुकसान हैं। कुछ और भी लोग हैं। मैडम, आपके पास भी नागरिकता नहीं है, और जहाँ तक मुझे मालूम है आपका ये बच्चा है छोटा, इसके पास भी नागरिकता नहीं है। लेकिन ये अब आपको कहीं ना कहीं नागरिकता मिल पाएगी, कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत है, क्योंकि कुछ खरीद भी पाएंगे। और अगर बाहर भी निकलते हैं तो आधार कार्ड अपने हाथ में होता है। अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो आधार कार्ड अपने हाथ में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अभी हमारे आए थे, उनके 2 बच्चे होने वाले थे, दोनों के। कितनी बार उन्होंने धक्के खाए, लेकिन उनको एडमिट ही नहीं कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं रास्ता खुलेगा। कितने दिन हो गए आपको पाकिस्तान से आए हुए? हमें 13 साल हो गए। क्यों, क्या मजबूरी ऐसी बनी कि आपको वहां से आना पड़ा? मजबूरी तो कोई नहीं थी। पहले तो खुशी खुशी में अपने देश में जा रहे, अपने देश में अपना देश करके आ गए। तो उसकी वजह, जैसे हम आ गए तो पीछे हमारा परिवार रह रहा है आधा, तो उन्होंने सोचा कि आधा परिवार चला गया और हम भी चले जाए। इसी चक्कर में सभी आ रहे हैं, बस अपना देश। जब आपका ये बच्चा हुआ तो आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा है? यहाँ पे करनी तो पड़ती है। ये तो मान लो हमें 13 साल हुए तो हमारा आधार कार्ड बना हुआ था, तो मतलब कि हमें एडमिट कर दिया। लेकिन जिनका नहीं बना हुआ है उनको तो बहुत दिक्कत आती है। तो अब जो आपके बाकी परिवार के लोग हैं उनको भी अब सदस्यता मिल जाएगी, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और आगे भी हम तो आस लगाते हैं कि मोदी सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करे, हमें घर का मकान मिले, कम से कम कुछ पैसों में सही, लेकिन कुछ मिले। अब देखो हम कैसे फटे हुए झोपड़े में जैसे रह रहे हैं, लेकिन रहना मुश्किल भी लग रहा है। और फिर आस भी लगा के बैठे कि क्या पता कब जैसे अभी हो गया, कोई पता ही नहीं चला, तो क्या पता हो जाए। सरकार और भी कुछ लेके आए? आप बहुत लेके आएंगे, बहुत, अगर विश्वास रखोगे तो। क्या नाम है आपका? सुमेरा जी। सुमेरा जी, और भी आपके यहाँ आसपास करीब 100 सैकड़ों परिवार यहाँ रहते हैं, क्या उनको भी काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है? क्या करते हैं जीवन यापन करने के लिए? क्या
किस तरह के काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं मिल पाती। जैसे औरतों के लिए भी बहुत काम है, जैसे पीस बनाओ तो, लेकिन पीस में भी पूरे पैसे नहीं मिलते। जैसे मान लो पूरा दिन काम करते रहो, 50 रुपये हाजिरी पड़ती है या 20 रुपये हाजिरी पड़ती है। और सिलाई का काम करते हैं हम लोग, घर पे ही करते हैं, लेकिन वो भी अब देखो जैसे घर घर में सिलने शुरू हो गए और बाहर के लोग ज़्यादा आते ही नहीं है, तो उस चक्कर में वो भी हमारा काम नहीं चलता और फिर पीस का काम करना पड़ता है, जैसे 4 रुपये 5 रुपये। अब नागरिकता के रास्ते खुले हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। इस कानून के बाद देश भर में खुशी की लहर है। जो पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, जो राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहते हैं, उनके लिए काफ़ी खुशी की लहर यहाँ पर देखी जा रही है। लोग अलग अलग जगहों पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और होली से पहले होली का त्यौहार जो है वो मना रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, आप कब आए थे पाकिस्तान छोड़ के? हम अभी आए हैं, 4 महीने हुए हमें तो। 4 महीने? क्यों, क्या मजबूरी हुई ऐसी कि आपको आना वहाँ पे बहुत ही मजबूरी है, यानी कि वहाँ पे कोई भी सुविधा हमें नहीं मिल पाती। वहाँ पे बहुत बड़ा, यानी कि हमें डराया धमकाया जाता था। हमें अगर मैं स्कूल में मतलब कि पहले नंबर पे था, लेकिन मुझे वो नहीं बनाते थे, यानी कि वो जो मॉनिटर बनाते हैं वहाँ पे, वो किसी और को बनाते थे। यानी कि वहाँ गैर मुस्लिमों से बहुत नफरत करते थे। हमें स्कूल में पानी पीने के लिए भी नहीं देते थे और उनके बर्तनों को हाथ लगा लेते थे, वो बर्तन भी फेंक देते थे। अब यहाँ पढ़ाई कर रहे हो आप, स्कूल? अभी हमें यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा क्योंकि आईडी वो अभी नहीं, आधार कार्ड नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ पे नहीं मिल रहा अभी। तो ये तमाम तरह की दिक्कतें हैं जो पाक विस्थापित जो लोग हैं उनको सामना करना पड़ता था, लेकिन सालों से हिंदू परिवार यही मानसरोवर में रहते हैं। अब नए कानून के बाद, CAA के बाद, इन तमाम लोगों को भी नागरिकता मिल पाएगी। नागरिकता के जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने इनके लिए खोल दिए हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी जिनको पाकिस्तान में सिर्फ इसीलिए प्रताड़ित किया जाता था क्योंकि वहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी थे, यानी अल्पसंख्यक होने के कारण इनको वहाँ पर प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। आज दिल्ली के यमुना किनारे में बस्ती डालकर ये लोग रह रहे हैं। CAA का नोटिफिकेशन यानी नागरिकता संशोधन कानून अब केंद्र सरकार लेकर आ गई है और इन लोगों को अब नागरिकता दी जाएगी। इन लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं क्या इनके मन में अब विचार है। मैडम नमस्कार, क्या नाम हुआ? नमस्कार, नानकी है। अब नागरिकता देने की बात हो रही है कि आप लोगों को नागरिकता मिलेगी, क्या मन में खुशी है इस चीज़ को लेकर? अब बहुत खुश हैं हम लोग। जो पहले तो आमिर शाह को हम धन्यवाद कहना चाहते हैं और मोदी जी को प्रणाम करना चाहते हैं। तो क्योंकि हमें पीड़ित थे तो उनको हमें सहारा दिया। और भी बात है क्योंकि वो धर्म के कारण पे वो चल रहा है, धर्म के ही कारण पे चला, क्योंकि हम हिंदू है। वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा हमारी। मगर हमें 12 साल से तपस्या की है, वो तपस्या का फल मोदी जी और जोगी जी और आमिर शाह हमें तीनों ने मिलके हमें दी है। एक तो विष्णु हो गया, बिरमा हो गया, महेश हो गया, तीनों ने हमें हक दिया है। हम पहले तो उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं। और जो पक्षबाजी कर रहे हैं उनसे भी हम कहना चाहते हैं पक्षबाजी मत करो, हमें ना हमारा हक मिल रहा है तो वो हक देना ही चाहिए। कोई भी किसी का हक नहीं छीनना चाहते है। जो केजरीवाल कहना चाहता है कि यहाँ पे इसको ये नौकरी छीनना चाहते हैं, हम भाई 12 साल से किसकी नौकरी छीन ली? किसी की भी नहीं छीनेंगे, ना छीनिए ना छीनेंगे। बाकी ला ये लोग केजरीवाल खुद ही अपने घुट घुट के मर रहा है कि हमारी नौकरी नहीं। भाई हम आपकी जगह नहीं लेंगे, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हम खेती बाड़ी करने वाले इंसान हैं, हम खेती बाड़ी करे के इंसान हैं, किसानी का ही काम करें। हाँ मानते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख के वो नौकरी मिलेंगे, हम भगवान का कसम नहीं उठाते। क्यों धर्म नहीं उठाएंगे? क्योंकि हमारे बच्चे भी नौकरी लेंगे। ऐसे तो नहीं है हम पढ़ा लिखा के नहीं लेंगे, उनकी भी तपस्या, वो नौकरी लेने हक जोगी होगा। मगर जो ये बात पहले की सोच रही थाप रहे हैं, इनको नौकरी बंद किया जा रहा है, ये बात अच्छी नहीं है। यही सवाल उठ रहा है, विपक्ष यही कह रहा है कि पहले ही देश में बेरोजगारी है, इतनी आबादी है, अब जो पाकिस्तान से आप लोग आए हैं, जो शरणार्थी हैं, इनको अगर नौकरी दे दी जाएगी तो जो पहले से भारत में रह रहे हैं, जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। अरे नहीं 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 नहीं, हम खेती बाड़ी करेंगे और जितना है वो अपना कनक उगाएंगे, वो खिलाएंगे केजरीवाल को, इनको हम नहीं लेंगे। हम खेती बाड़ी वाले इंसान हैं। जो गेहूँ को हम बोएंगे, गेहूँ को ही खाएंगे, उसको भी खिलाएंगे, हम इसका एहसान नहीं लेंगे। हमें हमारे लिए मत ये चिंता कर। मगर चिंता इस बात की है, हमें नौकरी क्यों नहीं देना चाहिए? हमारा हक मिलना चाहिए। जो हमारा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा, हम इतने पैसे लगाए, नौकरी नहीं मिलना चाहिए, मिलनी चाहिए।
हम खेती बोएंगे और बच्चे पे लगाएंगे, उनकी नौकरी दिलाएंगे। पाकिस्तान में क्या स्थिति थी जब आप लोग पाकिस्तान में रहा करते थे? वहाँ पर प्रताड़ना की गई जिसके कारण भारत में क्या कुछ पाकिस्तान में हुआ करता था? अब देख, पाकिस्तान की तो बातें सुन पी रहे हो और वहाँ से बातें आ पी रही हैं कि कितनी वहाँ पे पीड़ित है। हिंदू वो भी आपस में ही, मुसलमान भी लड़ रहे हैं भूख प्यास के लिए। वो हमने कहना चाहते हैं, हिंदू पे भी बहुत अत्याचार हो ही रहा है। एक एक बहू बेटियों पे भूख के मारे, प्यास के मारे। अब किसी के पता नहीं शराब लग चुका, पाकिस्तान को पता नहीं क्या हो चुका है। हम ये नहीं कहना चाहते। अब तो यही है, पाकिस्तान छोड़ तो यहाँ केजरीवाल हमारी क्यों नागरिकता रुकाना चाहते हैं? क्यों वो पाकिस्तानी है? ये हमने कहते हैं हमारी नौकरी पाकिस्तान, तो चलो वो रुका रहे हैं, वो केजरीवाल क्यों रुका रहे हैं? पाकिस्तानी है, वो मुसलमान है। हिंदू की तरफ हमें ये कहना है, मानवता के लिए ये करना चाहिए। हमें मोदी जी ने जो इसने हमें हक दिया, वो उन पे पक्षबाजी मत करो। अब नागरिकता संशोधन कानून आ गया है, आप लोगों को नागरिकता दी जाएगी, कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब हमारे लिए मोदी इतना बड़ा काम कर रहा है, तो केजरीवाल के हम पड़ोसी हैं, बिल्कुल करे केजरीवाल के घर के आमने सामने बैठे हैं। मोदी तो हमने अभी देखा भी नहीं, ना जाने कहाँ उसका घर है। कम से कम मोदी से भी ज़्यादा हमारे को इसको सहायता ये करना चाहिए। केजरीवाल हमारी सहायता करना चाहिए। वो दिल्ली का राजा है और हमारी सहायता वो करे, हमारे पास में मन मत लड़े। वो पाकिस्तान में क्या प्रताड़ना हो? जब आप लोग पाकिस्तान पे रहते थे, वहाँ पे बड़ा अत्याचार किया जाता था हिंदुओं के ऊपर, सिखों के ऊपर, क्योंकि अल्पसंख्यक थे जो, तो वहाँ पर क्या प्रताड़ना होती थी, ज़रा एक बार दर्शकों को वो बताइए। पाकिस्तान में पहले भी कोई होता था जुल्म, अभी भी है वही, उसमें कोई कमी नहीं है। हमें नहीं, पूरी देश को पता है, प्रधानमंत्री को भी पता है, देश के बच्चे बच्चे को पता है। हम अपने मुंह से क्या कह सकते हैं? हमारा पूरा परिवार वहाँ पे है। यहाँ के जैसे कि थोड़े से ही आए हैं, थोड़े से ही आए हैं। खुद मेरे पेट की बेटी वहाँ पे है। हाँ, मेरा परिवार बहुत है, मेरे देवर जेठ जितना ही परिवार मेरा पीछे बहुत है। पाकिस्तान हमारी जन्म भूमि है, वहाँ पे हमारा जन्म हुआ, हम उसकी कोई शिकायत नहीं करते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले ऐसे हैं तो पाकिस्तान बेचारा क्या करे? वो तो हिंदुस्तान है ना, पाकिस्तान भी तो हिंदुस्तान है। वो ना जाने कहाँ आसमान से तो नहीं गिरा पाकिस्तान, इसी से निकला है वो। पर वहाँ के लोगों ने बड़े अत्याचार किए थे आप लोगों पर, बहुत प्रताड़ना की थी। अत्याचार करे, भगवान करे वो भी खुश रहे, हम नहीं चाहते हैं। हम यहाँ के चाहते हैं। उन्होंने तो कुछ किया तो किया, मगर यहाँ हिंदुस्तानी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो हमारे सगे बहन भाई है ना। अगर सगे बहन भाई ना होते तो हमारे लिए रात रात भर यहाँ क्यों जागते, हमारे लिए लंगर क्यों बनाते, हमें यहाँ बैठने क्यों देते? वो तो हमारे सगे हुए ना। यहाँ पे ना जाने कितने खड्डे थे, कितनी कचरा गंद था, यहाँ पे बच्चे दफनाते थे। वो सारे हटा के साफ सुथरे करके हमने झुग्गी थोड़ी बहुत बना ली। एकदम से लेटर आ गया कि यहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें बिल्डोजर फेरा जाएगा। ये क्या बात हुई? कोई हम चिड़िया थोड़ी ना तो उड़ा देंगे तो घोंसला तोड़ देंगे। ये तो हम इंसान है। वापस ले लिया है, वो आदेश वापस ले लिया, जो ऐसे ही रह पाएंगे आप? इसलिए तो हम धन्यवाद करते हैं मोदी सरकार का, जो भारत सरकार है, सबको हाथ जोड़ के हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारी सुन ली, उन्होंने हमारी सुन ली उसने। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। All right, so there you heard it, the stories of the people. They are thankful for the government for implementing Citizenship Amendment Act. There are a number of problems they have been facing. They don't have the Aadhaar card, they don't have the ration card, they are not even given hospital beds simply because they do not have these documents. So they don't have access to healthcare, they don't have access to education, they don't have access to jobs, they do not have employment. And all these problems are now going to vanish after they get the citizenship of the country. Let's quickly start off this discussion. Go Sumit on the telecast with me. Sumit, the questions that are being raised by political parties, particularly by Aam Aadmi Party, which has taken the tangents to how the jobs are then going to be confiscated, allegedly confiscated by these immigrants. They have said that the government of India has opened the doors for immigrants. Meanwhile, the other aspect that has been played up by other political parties, including the DMK, including Congress, TMC, is about how they want to polarize it. They are talking, they're making it into a Hindu-Muslim row. Now, how should India tackle this? Megha ji, thanks for having me on your show. In fact, it is very appalling
Because to best of my knowledge, Delhi doesn't neither have a passport or a visa. If somebody from Chennai wants to come to Delhi, does he need approval of Kejriwal ji? From Bengal wants to come, does he need approval of Kejriwal ji? From Kashmir wants to come, from Assam wants to come, from Gujarat wants to come. So when the whole India is coming to Delhi and when the whole of Delhi is going to Bangalore, Chennai, Hyderabad, West Bengal, wherever in this country, we still have free movement. We don't need passports and visas. So how come these handful of people are going to dismantle the future of Delhi? That talks about because you will not dare to come and oppose them because they're Hindus. Now you are trying to come through another angle because you don't want to play this Hindu Muslim card. You want to come through another angle and oppose them, say because they are going to take away all the jobs. What about so many people who have immigrated to Delhi? And Mr. Kejriwal comes from Haryana, to best of my knowledge. He was not born in Delhi. He was born in Haryana. So मतलब हम तो जो करे वो ठीक है. I mean, I am the CM of Delhi. I am born in Haryana, but I am fully legitimate. I have not taken anybody's job. I have not taken anybody's post. But there's a person who is being suffocated, who has been, who has been living a pathetic life in Pakistan. They've been persecuted because they are Hindus. They are coming in Delhi. They've been waiting for 14, 15 years patiently. Now, if they get little bit benefits, it's okay. How come Rohingyas are getting benefits in Delhi? How come Bangladeshis are getting benefits in Delhi? If you look at the numbers, there is believed to be around 1 crore Bangladeshis and Rohingyas in West Bengal. Why they are not talking about it? And as far as the DMK is concerned, I think DMK has a problem of Hindu hatred. They are devout Hindus at their homes, in their temples, in their all religious ceremonies. But when it comes to politics, they want to be the most anti-Hindu scene. What has Hindu-Muslim got to do with it? And where will the Hindus go? Hindus only have one country. Muslims have 57 countries, Christians have 150 countries. But for a poor Hindu, there is only one country, that is India and Bharat. Now, from 20% to less than 2% in Afghanistan, 0.2%. In Bangladesh, they are diminishing like anything. Where will a Sikh go? From 6,06,000 to 4,600 in Pakistan. Okay. Where will the both go? Okay, so fair enough. Okay, but Gautam, the point also that is raised is about how this CAA law is discriminatory against the Muslims. Talking about questions being raised that why have Muslims been isolated from this Citizenship Amendment Act? Is it not true that when the 1971 Liberation War happened, isn't it true that there were a number of Bangladeshis, erstwhile Indians, who then crossed the borders, started living on the borders in West Bengal and Assam, simply because they were ill-treated in their homeland? And these not only included Hindus, but these included Muslims as well. So are we saying that Hindus are more Indian than Muslims? Well, it's basically a matter of understanding the difference between the National Citizenship Register and CAA. CAA is for basically persecuted minorities in Muslim majority countries, and that too just 3 countries, which are our neighbors, Bangladesh, Pakistan and Afghanistan. That they have been horribly persecuted in these places is evident. And so after a very long delay, 4 years, the law has finally been notified in terms of the way it can be implemented. And it has really no discrimination at all against the 200 million or so legitimate Indian Muslims who are full-fledged citizens of India. Having said that, I mentioned the National Citizens Register because there are millions, crores of illegal immigrants, including Bangladeshis, very thick on the ground in Northeast Delhi, a very precious commodity as far as Kejriwal is concerned. Also quite a few in Shaheen Bagh, right here in Delhi. They are thick on the ground in Kerala. And, they are laborers as such, willing to go and work in various places. And so most of the people who need labor does not say anything about it. It's the same in Gurgaon. All the people who work in the houses, domestic help, are by and large Bangladeshis, illegals.
Now, this needs to be sorted, but that's a separate exercise. Will we discriminate against all these people? I certainly hope so. They're not Indians. But as far as CAA is concerned, to try and blow this up into anything that is anti-Muslim is absolutely out of place. Okay. And it always was. Okay. It is a distortion of its intent. It's a distortion of what the law represents. And I think by now everybody has understood it, and there doesn't seem to be very many all right. ways that they can still keep protesting it. Chandni Preeti Shah, quickly a response from you. And of course, talking about, we've heard the plights, we've gone down in Delhi, in Majnu Ka Tila, where a number of these refugees have been living for decades together now, and they've not been given even the basic of the facilities. How soon can this law be implemented, the act be implemented? How soon can they become beneficiaries? How soon can they become legitimate citizens of the country? They can have their Aadhaar cards, they can have their ration cards and call themselves as the citizens of India. At the same time, how do we cater to Muslims who are living in Bangladesh and Pakistan, who have arrived from Bangladesh and Pakistan, and they may also have been persecuted, they may also have been mistreated, but it becomes a longer process for them to become citizens of India. All right. So, Megha, before, addressing your questions, I would like to, tell everybody a very important thing that everybody is missing and maybe people do not know about it. All right. So, during the partition of British India, it is very much evident, and it was known that it was partly based on religious lines, right, that led to the creation of Pakistan and India, and later Bangladesh from Pakistan. So now this historical context is very essential for understanding the CAA, as it actually relates to these countries with which India shares a very complex history of partition, which was based on religious identity. Now, in the aftermath of the partition, India and Pakistan signed the Liaquat-Nehru Pact. Now, that aimed to ensure the protection of the minorities in both the countries. And it was an agreement to safeguard the rights and the privileges of minorities. And it offered a framework to address their grievances and, prevent the forced migrations. Now, despite such agreements, the reality is that for many religious minorities in Pakistan and now later in Bangladesh also, it has been very challenging. We have seen numerous reports, over the decades, where we have seen cases of religious persecution, discrimination, violence against all these minorities. So the countries that are specified in CAA, that is Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan, they have Islam as their state religion, which has direct implications for religious minorities in this country. So now what is CAA? So the government, Indian government, has not done anything unconstitutional. There is a Section 8 in the Citizenship Act of 1955, which gives the central government power to make changes. And there have been a lot of changes in the Citizenship Act, the amendments that have been made earlier also. So in this act, in the CAA Act, what has been done? Some rules have been changed to make it easier for certain minorities, that is Hindu, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, and Christians from all these countries to apply and get the Indian citizenship. Okay. So they are going to... Okay, but there have also been, while you talk about the persecution of these minorities, the religions that you have named, there have also been a number of instances that have come to light that the Muslims who have migrated from India to Pakistan and Afghanistan and Bangladesh are not treated well as well. They are termed as muhajirs. And how do we work something in favor of them? And why not include these Muslims to be then given citizenship under the CAA? Sumit, you want to quickly make a point? Yes. All right. So see, India does not have a formal asylum system, nor have we signed the refugee agreement. All right.
Instead, we handle the refugees on ad hoc basis. So the UNHCR, that is United Nations High Commissioner for Refugees, that also operates in India, and that also plays a very significant role in the registration, protection, assistance of refugees from non-neighboring countries and those who are not covered by the CAA. Right, so that includes protecting even the Muslims that have entered into India, and we don't have an asylum system, but because we have an agreement with all the Liaquat Nehru Pact that we have in place, that is why only the minorities are covered in CA. But that does not mean that we do not provide citizenship to those people who are not. No, my question is, why not include them in the Citizenship Amendment Act? Why do you let them go through the longer process of becoming a citizen after a number of procedures that are fulfilled? Sumit, quickly a response to me before I wrap this up. You see, Megha ji, answer is very simple. You see, as India, we have an option wherein even a Muslim can apply from Pakistan to become a citizen, and he will be granted in due course of time. So, the best example is Adnan Sami, born in a Pakistani elite family. He applied for the citizenship, he got in due course of time. There is no rule as such, because if you're a Pakistani and a Muslim, you will not get the Indian citizenship. But there is a due course of time. But the problem at the hand is where the Hindus are getting literally extinct in Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh. We as a Hindu country have to be seen doing at least something which is happening in our neighborhood. Even my logical demand would be to extend it to every Hindu across the whole world, because for any Jew, if Israel is the by default country, if he or she is persecuted everywhere in the world, that should be for any Hindu. If you are a Hindu anywhere in the world, if you are persecuted, you should come to India. By the grace of God, Muslims have 57 countries, Christians have a lot of countries, but for Hindus, there is no other country. So answering your question, if somebody feels persecuted in Pakistan, he can apply through the due course of time. Okay, no, but that's what I'm saying. Are you saying that Hindus are more Indian than Muslims who left India and traveled to Pakistan and Bangladesh? And then if they were persecuted, we will have different rules applied for Muslims and different rules applied for Hindus, and we'll give Hindus the citizenship faster than we would give citizenship to Muslims. Megha ji, the problem is, in a Muslim country, if Muslims are persecuted, that's a law and order problem. Hindus are persecuted because they're Hindu. There is no law and order problem. It's targeted persecution. But isn't it true that a number of Indians who traveled to then constituted, then built Bangladesh, who were Hindus and Muslims, were also attacked at the very same time? It's not because of the fact they traveled from one part of the country to another, which up until 1971 was an entirety India. You see, up to 1971, it was a part of Pakistan. The challenge here is you have to look at the depleting population percentages of community. If the Muslim population was depleting in Pakistan at the same rate, then you will understand this problem. Why only in Afghanistan, Pakistan, and Bangladesh, the Hindu population is decimating? For example, if you look at Afghanistan, there's a range called Hindu Kush. A lot of people will not know. In Pashto, Hindu Kush means slaughtering ground of Hindus, where millions of Hindus were slaughtered because they are Hindus. I mean, I'm telling you the name Hindu Kush. So, when only you are persecuted because you are a Hindu, when you are persecuted because you are a Sikh, you are persecuted because you are a Jain and a Parsi, then these special provisions need to be brought in. Yet, yes, an Adnan Sami can come, and somebody like that can come and follow the due course of law. Okay. That's what it is. Okay, all right. Chandni, quickly a response from you. Yes. Yeah, so when you say that why are they not included, or why, you need to understand one thing, that this religious persecution is based on religion. Now, Muslims in all these three countries, when they are persecuted, that's a sect persecution. They are still Muslims. The CAA specifically says that the minorities who have been religiously persecuted, but that does not mean that the Muslims who have been persecuted cannot come in India and seek asylum or seek citizenship. In Pakistan, in 1947, there were 23% of minorities. Today, we have 3 to 4% left. In Bangladesh, fair enough. Gautam, you wanted to make a point. I have quickly 15 seconds before I wrap this up. Yeah, the basic thing is, at partition, as Chandni pointed out, there was a process in which all Muslims had the option to go to Pakistan. Many chose to, and some decided to stay back. Today,
if any Muslim, Indian Muslim, wants to go to Pakistan, he's not allowed to do so. That tells you something about a Islamic state refusing to take anybody from India and probably anywhere else. They recently kicked out lakhs of Afghans who've been living in refugee camps in Pakistan for 20 years. They just kicked them out ruthlessly. So I don't see there is any equivalence between the way we treat our Indian citizens who are Muslims and the way they treat themselves as well as other Muslims that may be in their country or wish to come to their country. Okay. So, this becomes a pretty specious argument to talk of what happens to Muslims who are Pakistani, are persecuted in Pakistan, want to come back to India. Okay. We can't take on the whole world. Okay, all right. I'm completely out of time. Sumit, you want to make a quick point? Yes, I'll give you some time. These are Islamic theocracies. We are the world's largest democracy. Second point, why when there's a Muslim problem, why even one Muslim country does not take one Muslim immigrant from any other country? Why does it become the problem of the whole world for us to settle? Why they are not taking people from Palestine, from Yemen, from Syria? They are not even ready to take one Muslim immigrant. Let the Islamic world answer this question. Okay, fair enough. On that note, I'm out of time, but I thank all of you for joining me on the telecast, sharing your important views on this debatable subject. Obviously, it is going to be continued to be raged as it becomes a burning issue amongst the political parties in our country. We'll keep a track of it. Thanks for watching NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.